Considering this felt need, I think particularly for the repeaters, it is important that after having known the entire sequence or the process, it is important कि आपको ये पता लगे कि आपको कहाँ काम करना है. For this, of course, you need to have some kind of a personalized mentorship or guidance. बिकॉज अदरवाइज आपको लगेगा आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो. ऑन पीयर ग्रुप में आप सजेशंस होते हैं, नो दे मे नॉट एग्जैक्टली बी फॉर यू, राइट, दे मे बी इन जनरल फॉर द ग्रुप. सो आपको ये तय करना है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कहाँ पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता है. सो दैट डायरेक्शन, द फोकस, I think that is something which you need to worried about. So for all the repeaters, I particularly feel that there is a need to see your grouping, right? वो कहाँ जा रही है, कौन से डायरेक्शन में आपका एफर्ट जा रहा है, और उसको किस तरह से आप रीएडजस्ट कर सकते हो. बिकॉज रिपीटर्स का क्या एक यूनिकनेस है कि यस, दे आर कीन, दे आर डिटर्मिन्ड टू गेट इनटू द सर्विसेज. मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, उनको प्रोसीजर पता है, उनको काफ़ी चीज़ें उनकी सही हैं, लेकिन एक सही गाइडेंस शायद नहीं मिल पा रही है. एवरीवन हैज़ परहैप्स टेकन सम काइंड ऑफ अ कोचिंग. एक पूरा एसएसबी का कोर्स आपने किया हुआ है यूट्यूब में, और अदरवाइज इन द पीयर ग्रुप ऑल्सो यू हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट. लेकिन आपका जितना जहाँ पे फोकस होना चाहिए, शायद अगर आपको कोई एसेसर से ऐसे जानकार से आपको सलाह मिल पाए, so you will do much better. And let me tell you very frankly, the maximum number of success that my students have had is those who are repeaters. Not to say that a fresher cannot succeed, but like I said, the trend, if you see in the SSB, practically every batch it is more number of repeaters who are getting recommended than the freshers. If you need guidance, I look forward to taking you up under my wings. So guys, having discussed the problems that the repeaters normally face, and those of you who are keen, especially repeaters, those who have been perhaps not finding out ki exactly kahan pe gadbad ho rahi hai, so we'll try and address those issues. So hoping to see you there.